from the Prabhupada Leela Amrit. It is Prabhupada जब सैन फ्रांसिस्को जा रहे हैं न्यूयॉर्क से, इस्कॉन की स्थापना कर दी है और प्लेन में फर्स्ट टाइम बैठे हैं और उनके सेक्रेटरी हैं उस टाइम, ये जनवरी 16, 1967 की बात है। यूनाइटेड एयरलाइंस जेट जो है वो डिसेंड हो रहा है कहाँ, सैन फ्रांसिस्को पर। और तभी प्रभुपाद अपने डिसाइपल रणछोड़ प्रभु की तरफ देखते हैं और प्रभुपाद इस समय 71 years old है and this had been his first air trip and Ranchor was just 19 and he was dressed in a suit and a tie and he was supposed to be Srila Prabhupada's secretary and he was a new disciple, but he had raised some money and had asked to fly to San Francisco with Prabhupada. During the trip, Srila Prabhupada had spoken very little. और प्रभुपाद जो थे हमेशा चैंटिंग ही करते रहे, उनका हाथ बीट बैग में ही रहा। और when the plane first risen over New York City, he looked down the window. और वो पहली बारी प्लेन में बैठे हैं और विंडो से नीचे देख रहे हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, स्काई क्रेपर्स, जो नीचे से बहुत बड़ी लगती थी, इस समय वो बहुत ही छोटी छोटी लग रही है। और जैसे ही प्लेन क्लाउड्स में एंटर कर गया, प्रभुपाद जो है खिड़की से बाहर देखते जा रहे हैं और he had been bothered by the pressure, उनके कान बंद हो रहे थे, बट और उन्होंने बोला भी ये और फिर पर ज्यादा नहीं बोले और जप करते रहे। एंड ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो और बाहर देख रहे हैं और कहते हैं these all are matchbox houses and streets stretching in the कह रहे हैं कि different patterns in this every direction. So when the announcement for United Airlines Flight 21 from New York came over the public address system, the group of about 50 hippies gathered closer together in anticipation. For a moment, they appeared almost apprehensive, unsure of what to expect or what the Swami would be like. So San Francisco में wait कौन कर रहे हैं? 50 hippie उनके लिए. Roger Seagal, we were quite an assorted lot, even for the San Francisco airport. Mukunda was wearing a Merlin, the magician robe with paisley squares all around. तो एक हिप्पी उनमें थे मुकुंदा और वो मर्लिन जो बाद में मुकुंद कहलाए, वो he was wearing a Merlin magician robe और बड़े फनी हिप्पीज जो थे बड़े फनी कपड़े पहनते थे. And I was wearing a sort of a blue homemade Japanese samurai robe with small white dots. Long strings of beads were everywhere. तो वो योगा से बड़े प्रभावित थे और वैसे ही eccentric way में तैयार होते थे. And गले में बहुत सारी मालाएं पहनी हुई और ऐसे वो सब तैयार हुए प्रभुपाद की वेट कर रहे हैं. Only a few people in the crowd knew Swamiji. Mukunda and his wife Janaki, Ravinder Sabru, Raya Ram, all from New York, and Allen Ginsberg was there. A few days before, Allen had been one of the leaders of the Human Bee in a Golden Gate Park, where over 200,000 had come together. इस टाइम हिपीज जो थे बहुत जोर पर था हिपी कल्चर अमेरिका में और प्रभुपाद को मिलने ये सब आए और ये बाद में ये सब बड़े ही उच्च कोटि के भक्त बने, ये जिनकी चर्चा यहाँ हो रही है. मुकुंदा जो प्रभु है, he became a sannyasi. Swamiji would be pleased, Mukunda reminded everyone, if they were all chanting Hare Krishna. When he came through the gate, they were already familiar with Hare Krishna mantra. They had heard about the Swamis chanting in the park in New York, and they had seen the article about Swamiji's and the chanting in the local underground paper, the Oracle. और वो सब जानते थे क्योंकि मुकुंद न्यूयॉर्क से आए थे और वो बता रहे थे कि वहां पर प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होंगे अगर तुम सब क्या कर रहे होगे, चैंटिंग कर रहे होगे, तुम सब हरे कृष्णा महामंत्र गाओगे, सो प्रभुपाद विल बी वेरी हैप्पी. और वो सबको उत्साहित कर रहे थे महामंत्र गाने के लिए. और ये एयरपोर्ट की बात है. As the disembarking passengers entered the terminal gate and walked up the ramp, they looked in amazement at the reception party of the flower-bearing chanters. The chanters, however, gazed past through these ordinary, tired-looking travelers, searching for that special person who was supposed to be on the plane. Suddenly, strolling towards them was the Swami, golden complexioned, dressed in a bright saffron robe. So, वहाँ उस समय की बात हो रही है जब अमेरिका बहुत कम लोग जाते थे और प्रभुपाद अपने सन्यासी वस्त्रों में गेरुए कलर के सैफरन रोब्स में बाहर निकल रहे हैं और वो सब प्रभुपाद को देख रहे हैं. as a light effulgence है प्रभुपाद के फेस पर. Prabhupada had heard the chanting even before he had entered the terminal. और प्रभुपाद को वहीं से प्लेन से उतरते ही जैसे टर्मिनल की तरफ आ रहे हैं, he could hear the chanting. He could hear them chanting. So he was happy and surprised. Glancing over the faces, he recognized only a few.
Yet here were 50 people receiving him and chanting Hare Krishna without his having said a word. Mukunda said, "We just had a look at Swamiji and then we bowed down. Myself, my wife, and the friends I had brought, Sam and Marjorie. And then all of these young men and women followed suit and all bowed down to Swamiji, just feeling very confident that it was the right and proper thing to do." और सबने प्रभुपाद को वहीं पर ही प्रणाम कर दिया. एक मुकुंदा नीचे झुके और सब झुक गए. और ये एयरपोर्ट का सीन है. कहाँ? सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट में ऐसा प्रभुपाद के आने पर हुआ. तो श्री प्रभुपाद की जय.